exercise remission for condemned prisoners under the Code of Criminal Procedure. The decision has been welcomed by members of all political parties and senior lawyers across the country. Senior BJP leader Subramanian Swamy, while welcoming the decision, reiterated that the culprits should not be given further leniency. He said that he would file a review petition if that was the case. I welcome it. I tweeted this 2 days ago that if the Supreme Court is sensible, they will send this to a constitutional bench. And I am arguing, and I'll argue certainly before the constitutional bench, that these kinds of people can only get one relief. They want one relief, that the death sentence will not be executed. Death sentence has not been set aside, just that it will not be executed. The executive has decided it will not be executed. Now, once that is there, they are not entitled to any more relief. Senior lawyer Majid Memon dissected the decision and stressed on the point that it was right on the part of the Supreme Court to refer the matter to a constitution bench. Honorable Chief Justice, in view of the facts and circumstances involved in this particular case, has deemed it just to get a larger bench, constitutional bench, formed within 3 months' time, so as to examine the legality of the orders passed by the Tamil Nadu state by ordering the forthwith release of those who have been found guilty of killing the ex-Prime Minister of this country. Now, this act on the part of the Honorable Chief Justice of India, in my view, seems reasonable and correct for this reason, that the questions involved into this particular matter are both, there is some political overtone also, and plus there is a principle of natural justice also involved in this case. While the decision was welcomed by most, family members were definitely disappointed. Pedro Rivalan's mother expressed her grief. 23 வருஷம் போராடி இருக்கோம். இன்னும் என்ன பத்தல அப்படின்னு எனக்கு புரியல. இதுக்கு மேலயும் நான் போராடணுமா அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியல. என் பையன் நிரபராதின்னு வெளியே வந்திருக்கு. எல்லாம் நிரூபிச்சிருக்கிறோம், சட்டப்படி நிரூபிச்சிருக்கிறோம். முதல்வர் அம்மா அறிவிச்சுட்டாங்க இவங்களை விடுதலை செய்யறதா. இன்னைக்கு அறிவிச்சாருன்னா, சதாசிவம் ஐயா அவர்கள் இன்னைக்கு அறிவிச்சிருந்தாருன்னா, நாளைக்கு இல்லைன்னா திங்கக்கிழமை மிஞ்சி போனாலே என் பையன் வெளியே வருவான். எல்லாரையும் வரவேற்க நாமெல்லாம் தயாராகணும் அப்படின்ற ஆசையோட தான் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்தேன். Citing that the matter was of utmost critical concern for the whole country, as it will determine the procedure for awarding punishments under the criminal justice system, the Supreme Court has directed the 5-member Constitution bench to take up the issue within 3 months. A News9 report. Priyanka Gandhi is not taking the attack on her family lightly, and today she laced her election speech at Raebareli with humour, taking pot shots at the Saffron Party's PM candidate Narendra Modi. Narendra Modi's famous RSVP jibe at the Gandhi family has seen Priyanka Gandhi jump to defend her husband Robert Vadra. Today she added a dose of humour, noting that using terms like ABCD or RSVP were extremely childish and immature, to say the least. कभी ABCD, कभी RSVP, कभी ग से देश तो कैसे कहूँगा, ब से बर्फी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं कि देश की जनता है, जनता में विवेक है, जनता के कण कण में वो रास्ता की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है. Priyanka's sarcastic jibe was in contrast to the muted response she offered on April 22nd after Modi took pot shots at her husband Robert Vadra. बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं. मुझे दुख होता है, जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है. जितना गिराने की कोशिश
कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से, और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। Priyanka also latched on to the land grab charges which had earlier on been echoed by her brother Rahul Gandhi. आपके गुजरात का मॉडल की तरक्की है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। Continuing with her tirade against BJP's PM hopeful, she questioned what the Gujarat model had for farmers and labourers. अगर आप सत्ता चाहते हैं तो उनको ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है। आप ये बताइए कि मजदूरों की दिहाड़ी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में। आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया है। But even as Priyanka was hitting out at Narendra Modi, the BJP questioned the former's extraordinary interest in politics. But the sudden hyperactivity of Srimati Priyanka Gandhi Vadra is a tacit confession of the failure of Rahul Gandhi and to an extent Srimati Sonia Gandhi. The BJP spokesperson also hit out at the Vadra model of growth. प्रियंका जी, आप और आपके भाई और आपके माता जी गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात बहुत करते हैं, सवाल उठाते हैं। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद आपसे एक सवाल पूछ रहा है, ये रॉबर्ट वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? जरा इसका उत्तर दीजिए आप। 2-3 लाख की पूंजी लगाकर 1-2 साल के अंदर 300 करोड़ रुपया कमाना, ये कौन सा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है? The exchange of words in all probability will continue till the elections are over. A News9 report. When the going gets tough, it appears Mayawati, the BSP Supremo, doesn't toughen up and get going. Instead, she chooses to complain and fret at her opponents. On Thursday, the talk of not just the town but the entire country was BJP's prime ministerial candidate filing his nomination for the Varanasi Lok Sabha seat. But that has not gone down too well with the former Chief Minister of UP, Mayawati. इनके नामांकन करने की आड़ में एक दिन पहले से ही कल पूरे देश भर में जिस प्रकार से मीडिया द्वारा एक तरफा बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी को हाईलाइट किया गया है, तो ये सब अपने देश के लोकतंत्र की गरिमा के लिए ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए इसका मुख्य चुनाव आयुक्त को भी खुद ही गंभीरता से संज्ञान लेकर इस पर जरूर कुछ आगे के लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए। Mayawati also said that the entire crowd of BJP supporters were not citizens of Varanasi but had been brought in by the Saffron Party. इन्होंने जो कल रोड शो भी किया है, तो उसके बारे में हमें ये भी जानकारी मिली है कि उसमें ज्यादातर भीड़ बनारस के बाहर की ही थी। And the Behenji was not done yet. She said that all the political parties had virtually pocketed not just the media, wait a second, even astrologers and soothsayers. Hear it in her own words. बल्कि सभी विरोधी पार्टियों ने मीडिया के साथ साथ अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए अब पूरे देश भर के ज्योतिषियों को भी मैनेज कर लिया है। और इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नंबर 1 पर हवा बनाने के लिए भी इन पर काफी ज्यादा धन खर्च किया है, ऐसा लोगों का मानना है। But give it to the woman. She had one gem of an observation which is very, very logical to say the least. She questioned why Namo didn't choose Amethi over Varanasi. कि यदि इनको इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश में ही आकर यहाँ चुनाव लड़ना था, तो लड़ाई प्रधानमंत्री के कुर्सी की है, तो श्री नरेंद्र मोदी को तो फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने की बजाय तो इनको अमेठी लोकसभा की सीट पर श्री राहुल गांधी के खिलाफ ये चुनाव लड़ना चाहिए था। Mayawati, who was addressing the media, also used the opportunity to lash out at her opponents in Uttar Pradesh, dismissing Mulayam Singh Yadav's prime ministerial dreams. She lambasted him by questioning how he can consider himself capable of taking care of the country when he cannot take care of his own state.
So is this Maya's way of taking on political opponents? Only time will tell if all this will bear any fruit. The News9 report.